Okay, so basically we are today going to start GOC, and like earlier also I have told you all जो भी पहले से class में थे, and again I'll repeat that part. There is a basic difference between physical chemistry and organic chemistry, and that one difference is that physical chemistry is mostly mathematical. Very rarely you'll be getting some mathematics in organic chemistry. Otherwise, that is called physical organic chemistry. If mathematics starts getting involved in that part, है ना? So that is a separate branch of the organic chemistry itself. कहीं कहीं दिखेगा, but rarely you'll be doing any mathematical part in organic chemistry. कहीं कहीं आएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल zero होगा, but sometimes you'll be getting mathematics involved in that. But mostly this section of chemistry is free of mathematics. That's one part. Second part is when you go to physical chemistry, few chapters are definitely connected, but not all the chapters. Like whatever we are doing, we have started in chemical equilibrium. Atomic structure की पढ़ी हुई चीज का कोई एप्लीकेशन उधर नहीं दिखता है ना. So that was not useful in chemical equilibrium. Or thermodynamics was definitely used in chemical equilibrium. It will be used again later on. So that's one part. So few chapters are connected, but many chapters will not be connected. Like 12th class may will be going for solid state is a chapter which is not no more in mains, but it is still in advance. They have not removed it yet. तो उस चैप्टर को देखोगे दैट इज टोटली एन आइसोलेटेड चैप्टर जिसका बाकी किसी चैप्टर से रेयरली कोई मतलब होगा. हम लोग जब क्लब करना स्टार्ट करते हैं तो जबरन क्वेश्चंस बनाते हैं जिसमें chapters can be clubbed, but the concepts of solid state will be independent of the previous concepts mostly. ठीक है. तो फिजिकल केमिस्ट्री में इतना डिपेंडेंस, फ्यू चैप्टर्स आर डिपेंडेंट ऑब्वियसली. जो हम लोग आयनिक में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग थर्मो में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ेंगे, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. A part of whatever we have learned in mole concept will be utilized in solution and colligative property. जो gaseous में पढ़ा उसको thermo में use किया. But ऐसा नहीं था कि all the chapters are connected with each other and every chapter will be linked to any other chapter. But organic chemistry में you'll see that it is not like floor over floor. It is like there are 3-4 chapters which are going to prepare your foundation part of the organic chemistry, and then उसके ऊपर सारे chapter आने लगेंगे. And it will be like कि एक chapter के ऊपर दूसरे chapter की layer आएगी. That means if you are not having a good concept of GOC, it will damage you in all the remaining chapters. Particularly GOC, isomerism and reaction mechanism. These are three very important chapter. ऐसा कोई chapter तुमको NCERT में दिखेगा ही नहीं. So they have given you one chapter which is called some basic principle and techniques in organic chemistry. ऐसा करके एक chapter दे दिए और उसमें थोड़ा थोड़ा वो जो बोलते हैं ना प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा सब बांट दिया है. But that is going to prepare your whole section of organic chemistry. मतलब मैं कहूंगा कि 50% तो इधर ही करने वाले. तो GOC, isomerism and reaction mechanism, these are going to be the most important chapter of organic chemistry. और ये नहीं तो organic नहीं. That's one part. Second part, अच्छे part की तरफ आते हैं. Those students who struggle generally the mathematical part of chemistry, which is physical chemistry, or in general mathematics, which is involved in math and physics also, उनके लिए marks लाने का दूसरा तरीका, because it doesn't involve mostly the mathematical part. So that's why if you are good in conceptual discussion and if you can memorize few of the things, then you will be getting very good marks in organic chemistry and inorganic chemistry. So that can be bypassed for some of the students who are really struggling in mathematics, physics and physical chemistry. तो ये एक सेक्शन है जहां से कुछ मार्क्स उठा सकते हो, because few pages will be there in which some of the conceptual points will be there, some information will be there. If you know those concepts and logic, then you are going to get the marks. तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट जाएगा. कंसेप्चुअली इफ यू आर क्लियर अबाउट द थिंग्स, कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली डिफिकल्ट बनते हैं, बट मोस्टली इफ यू आर हैविंग अ गुड कमांड ओवर द नोट्स एंड इफ यू हैव सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स 8-10 साल के अगर किए हुए, तो यू बी गेटिंग अ गुड कमांड एंड यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. मेंस का तो सभी निकल जाता है, बट एडवांस में ऑब्वियसली दे प्ले विद द कंसेप्ट्स और मर्ज कर रहे होते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऐसा करके वो देते हैं. विल सी दोस क्वेश्चंस आल्सो, बट ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं. ठीक है. यू कैन मैनेज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इफ यू आर हैविंग गुड कमांड ओवर नोट्स एंड प्रीवियस ईयर का थोड़ा देखा हुआ है, तो इतने से काम हो जाता है. बट ऑब्वियसली विल बी प्रैक्टिसिंग मोर. तो जीओसी का मतलब क्या है? वी कॉल इट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल का मतलब, या जनरल का मतलब सिंपल सा नहीं है. यहीं पे बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे. दैट्स वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज, ऐसा कोई ऑफिशियल चैप्टर नहीं है, तो लोग अपने अपने तरीके से डिजाइन करते हैं. हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री का एक
रफली एस्टिमेट हो गया कि जीओसी में व्हाट वी कवर व्हाट वी डोंट कवर। कुछ फैकल्टी अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा भी कर देते जो हम लोग बाद में करने वाले हैं उसको भी इधर कर देते हैं। वैसा ही कंसेप्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। कुछ जगहों पे रिएक्शन मैकेनिज्म में ही आधा सिलेबस खत्म कर दिया जाता है, बिकॉज रिएक्शंस की बात हो रही है, सारे चैप्टर्स के रिएक्शन उधर ही पढ़ा सकते हैं ना। तो दैट इज अनदर पॉइंट। तो जीओसी में सीक्वेंस भी अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। डिफरेंट कोचिंग्स फॉलो डिफरेंट पैटर्न ऑल्सो, बट रफली what is covered in that is almost same for all the faculties and all the coaching industry. हाँ, सीक्वेंस कैन बी डिफरेंट, लाइक मेरा सीक्वेंस एक यूनिक सीक्वेंस दिखेगा तुमको। अब वो सीक्वेंस मेरे फैकल्टी ने फॉलो किया था इसलिए भी मैं कह सकता हूँ, बट दैट लुक्स मोर मोर लॉजिकल टू मी। इसलिए मैं जीओसी को भी आई बी डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, जीओसी 1 एंड जीओसी 2। ओके, व्हेन आई से जीओसी 1 व्हाट डज इट मीन? जीओसी 1 का मतलब है देयर आर फ्यू कांसेप्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जीओसी, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जीओसी 1, इन विच मोस्टली जो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट, उससे रिलेटेड प्लेनरिटी का कंसेप्ट, उससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशन जितने डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब जो देखा था, दैट विल बी द पार्ट ऑफ जीओसी 1 जो कि आज ही कवर करेंगे। एंड देन विल बी गोइंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको बहुत ही शॉर्ट में देखा था हम लोगों ने, केमिकल बॉन्डिंग, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस। एंड एक तीसरा उसी से एसोसिएटेड कंसेप्ट और आता है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। ये रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी एंड हाइब्रिडेशन तो किया हुआ है, बट एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वो करेंगे वापस से, ताकि इधर भी वो एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, जो नए बच्चे उनको वही बात समझ में आने लगेगी, और ये तो हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन और उसके एप्लीकेशन जो मेनली दिखते हैं, रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी, आई कॉल दीज थ्री कंसेप्ट एज जीओसी 1। व्हेन विल बी एंटरिंग इनटू जीओसी 2, जीओसी 2 में बाकी बची हुई जितनी चीजें टिपिकली कवर की जाती है, ओके, नो प्रॉब्लम विवान। सो जीओसी 2 में बाकी जितनी टिपिकल चीजें कवर की जाती हैं इन जीओसी, वो सब हम लोग जीओसी 2 में रखेंगे। वहां पर हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट एंड सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट की, विच इज इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब आता है। तो उन सब का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, व्हाट इज द टिपिकल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, दीज आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ जीओसी 2। ठीक है, तो रफ पिक्चर एक मिल गया होगा सब लोगों को, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीओसी 1 बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इट टुडे, तो आज थोड़ा हल्का ही रखेंगे, ज्यादा लोड नहीं दूंगा, बट अगेन इट विल, आई बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस जिससे तुमको ये भी पता चलेगा कि केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा रह गया था, कुछ बेईमानी कर ली थी हमने पढ़ने में, या फिर कुछ एवरीथिंग इज कवर्ड सो फार, है ना। तो दैट पार्ट ऑल्सो एक रिफ्लेक्शन मिल जाएगा तुमको कि केमिकल बॉन्डिंग अपना ठीक है कि नहीं, है ना। सो नाउ बेसिक कंसेप्ट जो हाइब्रिडाइजेशन का था, इफ यू रिमेंबर, जिन लोगों ने किया हुआ है या फिर जो नए भी लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से था? जब हम लोग when we are trying to get the property or the explanation of the structure of CH4, which is a very simple molecule, but उसमें structure or the shape or the all the properties of CH4 cannot be explained on the basis of overlap of pure orbitals, है ना। ये नहीं कह सकते कि कार्बन का p orbital is overlapping with 1s orbital of hydrogen, that cannot be said because उसके दो implication हम लोगों ने जो पढ़ा था हाइब्रिडेशन में, याद करो, मैंने बताया था all the bond lengths are found to be equal, all the bond angles are found to be equal, and those angles are 109 degree 28 minute in methane, है ना। तो वो बताने के लिए हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट है, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रिपेयर न्यू सेट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। तो लाइक एक एस और एक पी मिक्स होके एसपी के दो ऑर्बिटल्स देगा, विच आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, and they are going to participate in the bond formation, they will be accommodating the electrons and they are going to participate in the bond formation, है ना। ये बात हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे हाइब्रिडेशन में ऑलरेडी कर ली थी, है ना। तो ये एक कहानी हो गया। अब मान लो अपने पास तीन टाइप के जो ऑर्बिटल यहाँ काम आने वाले ऑर्गेनिक में, sp, sp2 एंड sp3, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली काम आने वाला है, क्योंकि कार्बन के पास, कार्बन इज सेकंड पीरियड मेंबर, तो इसके पास ना तो d ऑर्बिटल है और ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट्स व्हाई इसके तीन ही टाइप के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है कार्बन के लिए, sp, sp2 एंड sp3, है ना। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? अब ये जो तीन ऑर्बिटल की बात मैंने की है, ये तीन ऑर्बिटल कौन से होते हैं नॉर्मली? sp, sp2, sp3, जैसा मैंने ऊपर लिखा भी है कि हर ऑर्बिटल, हर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होता है, एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट
sp orbital, and if I ask you what is the percentage character of s in any sp orbital, what will be the percentage s character? 50. 50 है ना, this will be 50, this will be 50. If I say sp2 में s character कितना? 1/3 है ना, 33.33%. And if I ask you p character, तो that will be 66.67% है ना. किसी को कहीं डाउट रहेगा तो बोल देना. These are the simple thing. जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग किया हुआ है मेरे क्लास में, उनको ऑलरेडी ये सब पढ़ाया हुआ, वहीं से मैंने उठा के दिया भी है ना. तो all these things are clear. This is 25% है ना, 25 and 7. and this is 75. Is it okay with everyone? Do not hesitate in asking any doubt, even if you think कि सर क्या सोचेंगे, कोई कुछ सर कुछ नहीं सोचेंगे. Whatever doubts are there, ask it very frankly. जिन लोगों ने किया था क्लास, उनको मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था. जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. Uh, 33.3. Okay, so B option you are B or saying? C. B Sir, or B or C? C. Okay. Now ऐसे भी देखो ना, ऊपर लिखा हुआ है any NP orbital is participating to form sp, वैसे ही any two NP orbitals can participate in sp2. तो if 2pz is participating, then its contribution will be 33.33. If it doesn't participate, then its contribution is 0%. Is it okay? So it depends on whether it is participating or not, and that's why the contribution can be 0 or 33.33%. But if I ask you a similar question, slightly different word, now tell me, what is the answer of this? Sir, A आएगा. ये आ जाएगा ना, क्योंकि 2p orbitals में तो दो ऑर्बिटल कोई भी आएंगे and they'll be getting 66.67% total contribution है ना. So that's why this will be the answer. Now evaluation of hybridization already again, मैं अभी अपने बैच में दो तरह के लोग हो गए, एक जो आज ही अटेंड कर रहे हैं, एक जो है जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से किया हुआ है. तो मैंने इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात भी की थी, और उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे मैंने. वन पॉइंट वाज कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू आइदर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और दे आर गोइंग टू अकोमोडेट लोन पेयर, है ना. दैट वाज वन पार्ट. जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं, दे आर गोइंग टू रिमेन वैकेंट और they are going to accommodate the single electron. If there is an unpaired electron, if it is not participating in bond formation, it is accommodated by pure orbital. So that's why if you see these 3 points, first point is hybrid orbitals are going to generally form sigma bond or they are going to accommodate lone pair. Pure orbitals जो होंगे वो pi बनाएंगे या फिर वो unpaired electron accommodate करेंगे, और they are remaining vacant, है ना. Or I'll write they remain vacant in many cases. We'll talk about those examples also. But एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया था मैंने, स्टेरिक नंबर. अगर तुमको स्ट्रक्चर पता है तो किसी एटम का स्टेरिक नंबर का मतलब क्या है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इट इज हैविंग एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स ओवर दैट एटम इज हैविंग, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर. इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट एटम इज हैविंग इन द मॉलिक्यूल. एंड देन उसकी बेसिस पर वी हैड अ टेबल जिसकी बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर स्टेरिक नंबर 2 आया देन दैट एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड. इफ वो 3 आया देन इट इज sp2, 4 आया तो sp3. उसके आगे भी है बट अपने लिए यही काम की चीज है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके आगे काम नहीं आने वाला. जैसे इफ आई नो द स्ट्रक्चर, लाइक इफ आई टेल यू आई एम हैविंग स्ट्रक्चर, लेट्स से कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सल्फेट ले लेते हैं. This is the structure of sulfate, and then if I ask you what is the hybridization of sulfur in it, how will you determine what is the hybridization of this sulfur atom? How many sigma atoms are there? sp3. Okay, so how many sigma? There are 4 sigma. In every single bond, that is a sigma bond. In every multiple bond, one is sigma bond. Remaining are pi, है ना. तो ये हम लोगों ने सीखा था, and that's why we are saying कि there are 2 single bonds, so 2 sigma वहां से आ गया. Double bond में भी एक ही sigma है. So that's why we are saying 4 sigma bond
and plus zero lone pair over it, है ना, there is no lone pair. इसका मतलब क्या हो गया, steric number is equal to 4 and 4 steric number का मतलब होता है it is having sp3 hybridization, है ना, that we have already learned. वैसा ही कोई भी complicated molecule भी हो सकता है जिसमें they can ask you about different hybridizations. तो उसमें यही करना है कि if I know the structure, जैसे if I give you another structure, कोई भी एक organic molecule लेते हैं. So like if I give you organic molecule, मान लो acetic acid ले लिया, है ना, if I am having CH3 COOH. Now if I ask you दोनों कार्बन और दोनों ऑक्सीजन का hybridization बताओ, what is the hybridization of this carbon? Anyone? sp3. sp3 because it has got 4 sigma bond, 3 इस साइड से और 1 इस साइड से, है ना, that's why 4 sigma bond, there is no lone pair, so this is sp3 hybridized. What about this one? sp2. It is having 3 Two. sigma and without any lone pair, so this is sp2. What about this oxygen? sp. sp3. Okay, दो तरह के आंसर आ गए, sp and sp3 दोनों आ गया. Sir, Why sir, sp is not sp3. right? Sir, sp. Okay, why sp is not Sir, right? lone pairs भी है. हाँ, इसके ऊपर लोन पेयर Sir, भी है ना, lone pair. दो लोन पेयर है जो दिखेंगे नहीं, and that's why we are saying कि इसके पास we have got 2 sigma plus 2 lone pair also, है ना, and that's why steric number is 4. Is it okay जिसने भी sp बोला? So that's why this is sp3 hybridized. Now if I talk about this one, what is the hybridization of it? जिनको डाउट आ रहेगा रोक के पूछोगे, what is the hybridization of this oxygen? sp2. sp2 because it is also having 2 lone pairs and there is 1 sigma, because double bond mein there is just 1 sigma, so it is having 1 sigma plus 2 lone pair, and that's why we'll call it sp2 hybridized. Is it okay? Any doubt? So this is one simple example. If I know the structure, then I can tell that ki, what is the hybridization of different kind of atoms. We'll do some practice also. Okay, so now basically if I am having a known structure, I can count the total number of sigma bond and the lone pairs over that atom, and then I can get the steric number, and steric number will give you the idea of the hybridization. Is it okay? Any doubt? Now, sometimes you'll be getting some molecules which are having odd electrons which are not participating. Then, अच्छा participating करेगा तो VBT तो हाथ उठा देता है ना. We cannot have explanation of superoxide ion from VBT. For that, we need to go to MOT, है ना, molecular metal theory में जाना पड़ता है. But if I am having odd electron which is not participating, then we are saying that that single electron is generally accommodated by pure orbital, है ना. अब ये single electron वाले system कहाँ से आते हैं? तो एक तो famous example NO2 का है जो कि बाद में हम लोग करेंगे because that will be coming in the exceptional order. But इसके अलावा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली चीजें कहां से आती हैं? तो एक मैंने समझाया था कि हाउ डू वी प्रिपेयर द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. मान लो आई एम हैविंग अ मॉलिक्यूल जिसमें आई एम हैविंग C with 4 bonds, out of which 1 bond is going to be broken during the reaction. If it is getting broken, there are 2 types of breaking or fusion of the bonds. One is called homolytic, another is called heterolytic. Homolytic का मतलब है the shared electrons will be equally divided between the atoms which are bonded before breaking of the bond, है ना. तो इसका मतलब है यहाँ अगर ये ब्रेक होता है ना, तो ये क्या होगा, C के पास यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और X के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, and that's how this thing is prepared, which is not very stable but it is still existing, and this is called a reactive intermediate, है ना. तो this was called free radical, if you remember. अब इस free radical में कौन सा वाला रिएक्टिव इंटरमीडिएट है? राइट. this is free radical, है ना. नहीं So we are सर, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा है? intermediates का मतलब क्या होता है कि those things are real first thing, but they are being prepared during the reaction, but they are not that much stable, that's why they'll ultimately get converted into some other product, है ना. So they are formed during the reaction but not that much stable that they can be isolated. Some exceptionally stable intermediates can be isolated, but otherwise generally they are not that much stable, and that's why they cannot be isolated. They will ultimately converted into another product, है ना. तो क्या होगा, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं ना, रिएक्शन में रिएक्टेंट से विच इज कॉल्ड सबस्ट्रेट दैट विल प्रोड्यूस इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट विल फाइनली बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर प्रोडक्ट्स. ओके, so these kind of intermediates are there, and
what type of intermediates you are going to deal with. So I'll be showing you 4 kind of important intermediates. There are other kinds also, but not very important. या फिर कह लो कि सिलेबस में नहीं है. So these are 4 kind of reactive intermediates we are talking about. अब इन चारों में अगर मैं पूछूं कि सबके हाइब्रिडाइजेशंस बताओ, तो इफ यू सी कार्बोकेटायन में विल बी हैविंग लाइक ये है कार्बन है, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस वन, कैन यू टेल मी? sp2. sp2 होगा because it is having 3 sigma bond and there is no lone pair, there is a vacant orbital. तो ये कैसा दिखता है एक्चुअली? इट इज अ प्लेनर. sp2 का मतलब है ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है ना. तो हाउ विल इट लुक लाइक? इट विल बी लाइक h h h and there is a vacant orbital which will be a pure orbital है ना. So this is a pure p orbital. Okay, so there are 3 sigma bonds जो कि इसने हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाया, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि दिस इज प्लेनर. और इसका इंप्लीकेशन आएगा बाद में, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे. तो बिकॉज इट इज प्लेनर इट विल हैव सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पाथ ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. इफ आई आस्क यू दिस वन कार्बन आयन, यहां पर हाइब्रिडेशन बताओ. व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन जो इंडिकेट किया मैंने रेड से. ओके, sp3 आ रहा है. why sp3? because it has got a lone pair also है ना. so that's why we are saying कि this will be having, ये तो देखो इसका शेप जो आ रहा था that is trigonal planar. this is having shape, इसको हम लोग बोलेंगे this is trigonal planar. but if you see this one, तो ये इसके पास एक lone pair है and because of that it is getting a negative charge and there are 3 bonds है ना. तो ये कार्बन आयन जो है ना, its shape will be called pyramidal shape. and now we are saying कि it is sp3 hybridized. if I talk about free radical, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री रेडिकल, यहाँ जो कार्बन है व्हाट विल द हाइब्रिडेशन ऑफ इट? तो दिस इज CH3 डॉट, डॉट से इंडिकेट करते हैं फ्री रेडिकल्स को. एंड देन इफ यू सी डॉट जनरली इज नॉट कवर्ड एज द पार्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो विल कीप इट इन द प्योर ऑर्बिटल. इफ आई एम कीपिंग इट इन प्योर ऑर्बिटल, तो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर एक्सपेक्टिंग? देयर आर जस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना. one sigma bond, another sigma bond, another sigma bond, and pure orbital is going to accommodate this single electron. So this will also be called trigonal planar, है ना. This is also trigonal planar, and we'll still say that it is sp2 hybridized. Any doubt? There are 2 kinds of carbene. याद है किसी को जिनको पढ़ाया मैंने? 2 टाइप के कार्बिन किस क्या क्या है? सिंगलेट क्यों बोला था, ट्रिपलेट क्यों बोला था, याद है क्या? एनीवन? तो चलो क्या है यहाँ पे देखो, एक ही ऑर्बिटल में वी हैव गॉट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स है ना, एंड यहाँ पर वी हैव गॉट 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स. तो जहां पे एक ही में 2 है उसको सिंगलेट बोला है, जहां दोनों अलग अलग है उसको ट्रिपलेट बोला है. व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कॉलिंग देम सिंगलेट एंड ट्रिपलेट? इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने टोटल स्पिन की बात की थी. टोटल स्पिन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ है ना. एंड देन उसके बाद हम लोगों ने स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ा है एटॉमिक के टाइम. मैंने केमिकल बॉन्डिंग में रिपीट करवाया था, बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम से पढ़ते हैं. इफ यू सी दिस इज कंसिडर्ड टू बी, अगर मैंने इसको s बोला है ना, तो दिस इज 2s plus 1. नाउ इफ यू कैलकुलेट ना, अल्टीमेटली इट विल बी कमिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1. प्लस 1 आ जाएगा. अभी मेरे पास 2 तरह के कार्बिन दिख रहे हैं. वन इज सिंगलेट कार्बिन. बताओ जरा इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग? How many unpaired electrons it is having? That is unpaired क्या? Those are paired ना? It is paired ना? Both the electrons are in the same orbital singlet में है ना. यहाँ देखो
those are paired electrons, so there is no unpaired electron, and that's why we'll say iska spin multiplicity will be 0 plus 1, that is 1, and that's why we are calling it singlet. Okay, when we are going to this one, how many unpaired electrons it is having? 2. 2 hai. So this time if I calculate spin multiplicity, so how much will be getting? 2 plus 1, and that is 3, and that's why we are calling it triplet. Is it okay? ये वापस आएगा जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे, तो वापस इसकी चर्चा करेंगे, बट इसी चैप्टर में इनकी तो स्टेबिलिटी लोन पेयर नहीं बोल सकते इसको? नहीं ना, दो अलग अलग ऑर्बिटल में ना. लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ऑर्बिटल, देन ओनली इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर. अदरवाइज दीज आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, है ना. ये अलग अलग होंगे, ये ऐसा होगा तो ये भी ऐसा ऐसा, है ना. यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा होगा तो ये दूसरा ऐसा होगा, है ना. तो पेयरिंग इज हैपनिंग इन द सेम ऑर्बिटल. If they are the part of two different orbitals, they'll be having parallel spin and they are considered to be unpaired. Is it okay? Now, if I ask you, if I'm talking about singlet carbene में क्या होगा, hybridization and triplet carbene में क्या होगा, तो if I'm calling it singlet, singlet का मतलब ही दिख रहा है singlet carbene. तो देखो क्या हो रहा है, कार्बन पे यहाँ पर अभी जो बनाया हुआ है, there are 2H and एक vacant orbital और एक electron pair. Now, can you tell me the carbon का hybridization? What is the hybridization of this carbon? जो सीखा है उतने पे ही आएगा. So I am Mark. Please participate in the discussion. Wrong होगा कोई दिक्कत नहीं मेरे को. But you have to learn, and for learning you have to participate in the process. So whatever doubts you are having, definitely ask it. But whatever you are understanding, वो भी पूछने का है ना, या फिर express करने का है. Okay, very good. Okay. So Mark, why do you think that it should be SP? मतलब दो हाइड्रोजन है और आपने जस्ट बोला कि वो लोन पेयर नहीं काउंट करेंगे, नहीं, मतलब ये लोन पेयर है. दिस इज नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज लोन पेयर, है ना. तो इट इज हैविंग 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है यहाँ पे, है ना. दिस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है. ट्रिपलेट में दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे वी कॉल इट sp2. बट इफ आई से ट्रिपलेट वाला, इफ आई टेक ट्रिपलेट वन, व्हाट विल हैपन? Now we have got one carbon with 2 hydrogen. इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर देखो ऊपर बना हुआ ही है, और उसी से समझ में भी आ जाता है. इनफैक्ट अगर राइट तरीके से बना हुआ है तो मान लो 2 हाइड्रोजन है, और बोला एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन है. हाउ मेनी सिग्मा? हाउ मेनी सिग्मा? 2 sigma. Very good. And how many lone pairs? 0. 0. And that's why this will be sp hybridized. Is it okay? Anyone having any doubt? तो मुझे वो पहले वाला भी नहीं समझा और ये भी नहीं समझा. कौन सा वाला नहीं समझा, बोलो. वो जो ये सिंगलेट का, सिंगलेट कार्बीन वाला. सिंगलेट में देखो सिग्मा कितने हैं? सिग्मा Every 2. single bond is a sigma bond, है ना, 2 है. And is there any lone pair on carbon? तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा है, लोन पेयर कब कंसीडर करेंगे उसको, और If it is जो the आपने part of बताया the था वो. same orbital. Same orbital में I am having 2 electron, they are having opposite spin, so that is a lone pair. Okay. बट इफ आई एम हैविंग एक ऑर्बिटल इधर है, एक ऑर्बिटल इधर है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो वील कॉल देम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अगर सपोज कोई कंपाउंड लिया तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हुए हम सीधा लोन पेयर बना देते हैं, तो फिर उसका नहीं 2 नहीं, वही मैंने बोला. नॉर्मल कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट पेयर्ड, बट दीज आर इंटरमीडिएट्स, ये बीच में बनते हैं ना. तो बनने के प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि वो सिंगलेट बनाने वाला है कि ट्रिपलेट बनाने वाला. चलो, तुमने अगर अटेंड नहीं किया हो तो मैं समझा देता हूँ सिंगलेट कैसे बनता है, ट्रिपलेट कैसे बनता है. ठीक है, देन यू विल गेट मोर क्लियरिटी. मान लो मेरे को 2 बॉन्ड टूटने हैं, कार्बन के 2 बॉन्ड्स टूटने हैं 4 में से, एक एक्स है एक वाई है. एंड इफ देयर इज सम प्रोसेस, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखेंगे कि कब होमोलिटिक ब्रेकिंग होती है, कब हेटेरोलिटिक होती है. बट इफ आई से बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी ब्रोकन होमोलिटिकली, क्या लगता है रिजल्ट क्या आएगा?
X के पास इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे भी इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे भी इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा ना, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ ट्रिपलेट. ये भी होमोलिटिक था and this is also homolytic cleavage, and that's how we are getting a triplet carbon. Okay, now I'll be giving you another way. मान लो in another case the conditions are such that both of them will be having heterolytic fusion. heterolytically break होने वाला. heterolytic का मतलब होता है the shared electron will be captured by one of the given atoms which are bonded, है ना. तो C और X में मान लो C ने कैप्चर कर लिया. C ने कैप्चर किया तो क्या होगा, यहाँ लोन पेयर पूरा कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. और यहाँ पर मान लो यहाँ भी, यहाँ पे हेट्रोलिटिक हुआ और यहाँ पर Y ने कैप्चर कर लिया, तो यहाँ क्या आएगा, वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गेट अ सिंगलेट कार्बन. इज इट ओके? So that depends on the process and the conditions you have applied during the reaction कि homolytic होगा या heterolytic. Homolytic cleavage of both the bonds, two bonds, is going to give you a triplet carbon. Heterolytic fusion of two bonds is going to give you singlet carbon. Is it okay? In which at one place carbon is the acceptor or carbon is the capturer of that electron pair. Another place carbon is the loser of that electron. Is it okay now? Anyone having any doubt? कोई भी डाउट आए तो घबराना मत, बिल्कुल पूछने का है, क्योंकि आज पेन होगा तो पूरे ऑर्गेनिक के पूरे सिलेबस में पेन होने वाला है. और यही प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट से अपने डाउट्स को सप्रेस कर रहे होते हैं और एंड में पता चलता है पूरा ऑर्गेनिक हाथ से निकल गया. तो ऑर्गेनिक ऐसी चीज है जिसको हाथ से निकलने नहीं देना है. There are some informations, there are some conceptual discussions. If you do that, you are going to get the marks. हाँ, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी ऑब्वियसली. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सर मेरे को एक बार आप प्लेन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताओगे Okay. फॉर ट्रिपलेट. For triplet, okay. So if you see the triplet carbon में, if I ask you the number of unpaired electrons, how many unpaired electrons are there? 2. 2. And number of unpaired electron plus 1 is giving you a spin multiplicity. So if I Okay. ask you what is the number of unpaired electrons, 2. so you will say 2. Both the electrons are unpaired. They are remaining in two different orbitals, है ना? So they both are unpaired. So that's Okay. why if I ask you spin multiplicity, then it is 2 plus 1, that is 3. But if I ask you about this one, so if I ask you what is the number of unpaired electron, 0. 0. And that's why you will say that spin multiplicity is going to come will be 0 plus 1, that is 1. And that's why यहीं से इसका नाम आया. That is the only part important when we are talking about spin multiplicity, है ना? So why we are calling one as singlet and another as triplet? So name is coming from the spin multiplicity of these two substances. Okay. Okay. Any doubt? You tell the homolytic, heterolytic part. Okay, homolytic का मतलब है if bond is being broken, how many electrons were shared? 2 electrons in every bond, है ना? तो ये झगड़ा कैसा है ना, ये दो शरीफ लोगों के बीच की बॉन्डिंग है. इफ इट इज बीइंग ब्रोकन ना, तो कहेगा तू अपना ले जा, मैं अपना लेके जाता हूँ. मतलब तूने रोटी लाई थी, मैंने दाल लाया, तो तू अपना रोटी ले जा, मैं अपना दाल ले जाता हूँ, ऐसा. इट्स लाइक होमोलिटिक ब्रेकिंग, है ना? होमोलिटिक ब्रेकिंग में इक्वल डिवीजन ऑफ द शेयर इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू हैपन. इज इट ओके? Yes. So there were 2 electrons in shared state. One will be captured by C, another will be captured by X. But if I say there is heterolytic, it's like माथा नोच लेने वाला. झगड़ा हुआ तो एकदम कब्जा मार के, जिसको मौका मिला वो कब्जा मार के लेके भागे. It's like C और X के बीच में if heterolytic cleavage is there and C is dominant one which can capture the electron pair, it will capture. ये शराफत नहीं दिखाएगा कि एक तेरा था तो तू ले जा. It will capture both the electrons, and if it is capturing both the electrons, then carbon will be getting the electron pair, X will be getting a vacant orbital. क्योंकि इसके ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में था उसको किसी ने छीन लिया है ना. हाँ. Okay? And that's why देखो क्या होता है ना, if I am having C और X के बीच का bond and if it is homolytic, so that will result in C पे
इलेक्ट्रॉन और x पे एक इलेक्ट्रॉन. But if I am having this case and if this is heterolytic, then what will happen? There are two possibilities. या तो C ने दोनों कैप्चर कर लिया तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा एंड X के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, या उल्टा हो सकता है C के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, X के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा. And that we are going to discuss during the reaction mechanism, that what will actually happen in different, है ना? Yeah. But these parts are clear na? Homolytic, heterolytic, Yes, singlet carbene, triplet carbene. Any doubt in this part? चलो ठीक है. Anyone else having any doubt? क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की. चलो तो एक्चुअली अगेन केमिकल बॉन्डिंग में ये सब करवाया हुआ मैंने, बट आई गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स. तो जैसे आई गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, एक दो सिंपल देता हूँ फिर देन we'll talk about this. Bond fission, bond cleavage, bond breaking, whatever you want to say, है ना निरंजन? Okay, these are the three words generally we use. So you can have very complicated molecule, you can have a simple molecule also, है ना? तो इस तरह के molecules मिल सकते हैं. पहला ये है. Second, if I give you चलो इनको साथ में ही डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि फिर कौन से कार्बन की बात हो रही है बोलना थोड़ा ऑनलाइन में मुश्किल हो जाता है. I'll just indicate it and you'll tell me the answers. Just tell me this carbon. What type of hybridization it is? sp2 sp2 sp2, very good. Three sigma bond without any sp2. What about this carbon? sp2 Again sp2, है ना? किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा रोक के पूछोगे. Even if other people are answering ना, you are responsible for yourself. अगर नहीं आए तो पूछने का है. It's like buses में लिखा रहता है ना, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे. That is also applicable here. तो अगर कुछ लगे कि डाउट आ रहा है, if other are clear, I am not clear. मेरा सामान ढूंढ खोया तो मैं ही ढूंढूंगा ना, है ना? So that's why I'm telling you, कहीं भी डाउट आ जाए तो even if other people are answering, you are not feeling comfortable कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो you have to ask it. This one, tell me. sp3 Very good, sp3. And keep expressing yourself. होता क्या है ना, इसे एक तो या तो डाउट आ जाएगा या फिर तुमको क्लैरिटी आ जाएगी. What about this one? sp2 sp2 again 3 sigma without any lone pair. This carbon? sp sp, very good. What about this one? sp sp. And the last one? sp2 Anyone having any doubt? डाउट है तो पूछने का है. चलो यहां से इंडिकेट कर रहा हूं मैं. दिस कार्बन sp3 sp3 because it will be having two hydrogen also, जो दिखता नहीं है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ना, हम लोगों ने वो सीखा हुआ है. What about this one? sp3 sp3 again. sp3 sp This is also sp3. yes sp2 What about this one? This will be sp2 sp2 What about this one? This is also sp3 This is sp3. ये वाला
डबल बॉन्ड है ना? ऑक्सीजन वाला सर, ऑक्सीजन में। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए दिस इज sp2 एंड ऑक्सीजन इज sp3 है ना? एनी डाउट? So am I making sense? ये लग रहा है यस कुछ सर। तो चल रहा है, अगर गड़बड़ हो रही तो बोलोगे। You're understanding नहीं these सर, things? यस सर, समझ में आया। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, बेंजीन रिंग कहीं भी मिल जाए, एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग इज हैविंग व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2 है ना? तो ऑल दीज आर हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जितने दिख रहे हैं ना, जैसे ही फिनाइल रिंग दिख जाए एज अ ग्रुप, इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल कंपाउंड होता तो फिर बेंजीन बोलते हैं। तो दीज आर sp2, दीज आर sp2। नाउ यू टेल मी अबाउट दिस नाइट्रोजन। What about this nitrogen? sp2. Oh, sp3 no, sp3. sp3. Why So sp3? sp3. there is a lone pair. हाँ, there will be a lone pair जो दिखेगा नहीं, तो particularly be very careful in normal compounds for second period elements, particularly carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. They are going to strictly follow the octet rule. They are going to have 4 electron pairs around them in normal compounds, not in intermediates में चला जाता है, but normal compounds में they will be having 4 pair of electrons. 3 bond दिख रहे हैं तो definitely एक lone pair रहा हो. And that's why we are saying that there are 3 sigma and 1 lone pair. So this is sp3 hybridized. What about this carbon? This one? sp2 sp2, 3 sigma without any lone pair. There are 4 pair of electrons around it. What about this oxygen? This oxygen, sp3 sp3. There are 2 lone pairs and they just sp2 one right? sp2 sp2 है ना? Is it okay? Up to 4th. Any doubt? Any doubt? Chalo. सर, इन ऑक्सीजन कैन यू रिपीट? Oxygen is having a double bond. Definitely it will be having 2 more electron pairs, है ना? Is it okay? ओके, If यस I'm having oxygen with a double bond, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होने चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इट मस्ट बी हैविंग 2 लोन पेयर्स है ना? सो इट इज ओके, हैविंग, ऐसा कुछ आ रहा है, तो इट इज हैविंग, दिस इज हैविंग 1 sigma plus 2 lone pair है ना? Out of double bond there is 1 sigma 1 pi, so we just count the sigma not the pi ना? And that's why we are यस saying सर। कि 1 sigma and 2 pi will give you steric number 3, so that's why it is sp2 hybridized. Okay, ओके, chalo, next one, this one sp3. sp3, because there are 4 sigma bonds. What about this one, second one? sp2. Raima, you are understanding these things? yes Okay, this one, answer it. sp2 sp2 है ना? There are 3 sigma 1 pi, तो sigma ही सिर्फ काउंट करेंगे, लोन पेयर तो है नहीं इधर. This one also sp2 है ना? What about this carbon? sp Why sp? so because it's triple bond तो nitrogen. C ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, जो लिख के दिखाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपने को पता होना चाहिए कि CN के बीच में will be having a triple bond, so that's why this is sp and this is also sp. Why this is sp? Because it is having a lone pair and it will be having a triple bond in which there will be 1 sigma bond, है ना? तो CN कहीं भी आ जाए, we will say that both the atoms are sp hybridized. This is sp, this is sp. Okay, and we are going to utilize this part in future discussion. What about C2CN4? There are actually 6 carbon atoms. What are the hybridizations? ये दोनों कार्बन का बताओ. sp2 Okay, and what about this carbon? sp ये तो sp का, CN का कार्बन तो नाइट्रोजन तो sp हाइब्रिडाइज्ड है ना? What is the structure of this compound? C double bond C, और जैसे C2H4 होता था ना, उसमें ये ट्रिपल बॉन्ड N लेके आएगा. It will have triple bond N. It will have triple bond N. आज समझ लो केमिकल बॉन्डिंग का अपना रिवीजन है, व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन केमिकल बॉन्डिंग, है ना? उसी का पार्ट वाइज रिवीजन हो रहा है अपना सब. So that's one part. What about CCN4? C, बाहर वाला C. What is the hybridization? So just a question. हाँ जी? So just a question in the sixth one. Okay. Sir, how will the nitrogen be sp? Because like Nitrogen is the having 1 lone pair and 1 sigma bond. sir, but in like sp there's no lone pair का case, right? No, ऐसा किसने बोला? If it is carbon, then there will not be any lone pair. But lone pair can be there, ना?
सर मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में जब मेजर टेस्ट 2 होता तब ऐसे एक क्वेश्चन में हमारे टीचर ने बोला था कि मतलब लोन पेयर कंसिडर नहीं करते एसपी के लिए। कौन बोल दिया भाई? तो सर एक बार उनसे पूछना, देयर वाज अ क्वेश्चन इन आईआईटी जेईई जिसमें पूछा गया कि इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा। पूछा गया कि इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा। आज दिखाऊंगा मैं वो क्वेश्चन। इसका ओके सर। डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस लेंगे क्या इसमें? नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो केस ही नहीं है। डायपोल मोमेंट पूछा था, इनफैक्ट पहले जेई एडवांस ने पूछा, बाद में जेई मेंस ने उठा के चिपका दिया सेम। एक एग्जांपल सिर्फ अलग कर दिया था। एंड एक कंपाउंड होता है यहाँ SH, ठीक है। तो इफ ये तो पता है ना कि यस लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट होता है ना। देयर यस इज डायपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर आल्सो। तो इसके यस लिए सर। यहाँ हम लोग कहते हैं यहाँ पे म्यू इज 0, यहाँ पे म्यू इज 0, बट यहाँ पे म्यू इज नॉट 0। we call it not 0, we call it not 0. Then how to justify this thing if it is not considered as the part of hybrid orbital? यहाँ देखो ये एक्सप्लेनेशन कैसे आता है। वी से दैट कि यहाँ जो लोन पेयर है ना वो भी लीनियर होगा बिकॉज इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके सर। ओके, तो यस ये देखो ये पूरा का पूरा ऐसा कंप्लीटली लीनियर अरेंजमेंट में होगा। दिस इज sp, दिस इज sp, दिस इज sp एंड दैट्स व्हाई दिस इज परफेक्टली लीनियर। तो यहाँ जो लोन पेयर का भी जो इम्पैक्ट आने वाला था that will be like this, so that will be exactly cancelled out by this. Okay, ओके सर। but if you see this one, यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, we are having NH2, there will be one lone pair and there are two hydrogen, but there is rotation allowed with this angle and that's why there can be infinite type of orientations. देखो ये जो मैंने एक particular orientation बनाया इसमें जीरो नहीं है। लोन पेयर एक इधर है दूसरा इधर है, they are not going to cancel each other, है ना। यस सर। Why they are having a particular orientation? यस सर। Because they are the part of the hybrid orbital, they are being accommodated by hybrid orbital and hybrid orbitals are having such type of orientations, है ना। तो जो मैंने जनरल ओके लाइन सर। लिखाया था ना कि लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर over an atom will be also accommodated by hybrid orbitals. Okay, तो CN वाले में हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट सर ले सो रहा है इन और एसपी वी आल्सो उसमें कंसीडर। नहीं ले रहा। अब देखो ना नाइट्रोजन के पास sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, sp के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना यस और सर। उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, लीनियर होता है ना। तो एक इधर और एक इधर, इधर से इसने बॉन्ड बना दिया और इधर ये एक्स्ट्रा रह गया लोन पेयर, है ना। यस दैट्स हाउ वी कैन जस्टिफाई, है ना। और बाकी बचे हुए दो बॉन्ड जो है वो तो पाई बॉन्ड है। इज इट ओके? यस बट राइट वाले मॉलिक्यूल में फिर क्या प्रॉब्लम होगा? राइट वाले मॉलिक्यूल में इट इज sp3 ना, दिस इज sp3, ओके ये सो सिग्मा वन टेट्राहेड्रल लोन पेयर है ना। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग पर्टिकुलर ओरिएंटेशन जो कि एग्जैक्ट अपोजिट नहीं हो सकता है ना। एग्जैक्ट अपोजिट कैन बी देयर इन सम ऑफ द केसेस आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस, है ना। So if you are having a if you are having a sample of compound, overall not all the molecules are going to have zero, है ना। And that's why you will always be observing a non-zero dipole moment with this sample. Is it okay? ये आई थिंक मुझे जेई मेंस में 2014 में पूछा है, एडवांस में बहुत पहले पूछ चुका था। सर तो एसपी में हम लोन पेयर कंसीडर हाँ जी लोन करेंगे पेयर को right? कौन एकोमोडेट करेगा बताओ ना। इफ यू से इट इज नॉट accommodated by Yes. hybrid orbital, then what will accommodate it? Pure orbital? सर सो इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल ही अकोमोडेट करेगा। हाँ ऑब्वियसली, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एकोमोडेट कर रहा है तभी तो उसको काउंट कर रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। ओके सर। क्लियर ना। यस सर। चलो, तो बेसिक्स अपना लूज नहीं करना है जस्ट बिकॉज समवन हैज सेड समथिंग, है ना। यू हैव टू आस्क इट लॉजिकली, है ना। लॉजिकली इफ यू आस्क मी द Yes. क्वेश्चन देन आई कैन आंसर इट, है ना। मैंने बोल दिया तुमने Yes. मान लिया तो मैं कुछ भी बोलता रहूंगा। हाँ, जहां पे Yes. if there are some points जहां पर multiple logics can work together and then we have to say कि इतना memorize कर लो क्योंकि multiple logics are working together, so there is no one way जिसमें तुम सारे एग्जांपल को कवर कर सकते हो। तो that I'll indicate you कि इसको memorize करना ये रट्टा वाला है। बट अभी तक जब तक मैं ना कह दूं everything is logical, you have to question it if you are not understanding it. Clear ना? Similarly, I have given you logic. I am asking you the counter logic. Try to make me wrong. Try to prove me wrong. Then I'll give you logic again, है ना?
But whatever I have said, that looks logical, ना? Is it logical जो मैंने बोला अभी तक? Yes, sir. तो दैट मेक्स सेंस, है ना, सिंपल है। इसलिए मैं बोला ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है ना, इफ यू गो लॉजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू बी राइट। कभी कभी मल्टीपल लॉजिक्स कैन, मल्टीपल फैक्टर्स कैन एक्ट टुगेदर, वहां पर पता नहीं होता ना अपने को कितना परसेंट किस फैक्टर का कंट्रीब्यूशन है। देन वी से दैट कि नहीं ये रट्टा वाला है, ऐसे केस में ये वाला याद रख, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स विल बी एक्टिंग टुगेदर। बट यहाँ अभी तक जो चल रहा है एवरीथिंग इज लॉजिकल। इनफैक्ट मैं एक्सेप्शनल केसेस में जाऊंगा, वहां भी मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों आ रहा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे दिस वन इज डेफिनेटली एसपी हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस वन इज एसपी हाइब्रिडाइज्ड। ओके, बट अगेन आई विल टेल यू कि ऐसा नहीं कि मैं ये कह दूंगा कि उन्होंने जो बोला होगा रॉन्ग ही बोला होगा। आई वांट दैट कंटेक्स्ट, है ना, कि किस कंटेक्स्ट में कौन से एग्जांपल में बात बोला। तो हो सकता है तुमने इंटरप्रिटेशन गलत निकाल लिया हो, दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल, है ना। तो आई कैन नॉट से कि समवन हैज सेड रॉन्ग, बट सीएन के नाइट्रोजन को एसपी हाइब्रिडाइज्ड अगर नहीं बताया तो डेफिनेटली रॉन्ग, या सीएन के लोन पेयर को नॉट एकोमोडेटेड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल बताया तो रॉन्ग। बट आई होप कि हो सकता है वहां कंटेक्स्ट कुछ अलग रहा होगा, शायद तुमने इंटरप्रिटेशन रॉन्ग ले लिया होगा, दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो सेंड मी दैट एग्जांपल, देन ओनली वी कैन डिस्कस इट, है ना। ओके, क्लियर ना सारंग? यू ओनली आस्क ना सारंग? सारंग यू देयर? अरे डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ जी, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ये तो मैं आज डिस्कस करने वाला था, नीचे जो मैंने लिखा है ना एग्जांपल, आई वाज गोइंग टू डिस्कस दैट, इट इज इन लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे। बट ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे देखो मैंने बोला ना कि पहले एडवांस ने पूछा फिर मेंस ने इसको रिपीट कर दिया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं दिया था मेंस ने, एडवांस ने ये दिया था और मेंस ने ये दे दिया। ओके, C2H4 कार्बन, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन वी आर एक्सपेक्टिंग? sp2 sp2 because it is C double bond C and then H and H, H and H, so there are 3 sigma bond in every carbon, so it is sp2. what about N2H4, इसको बोलते क्या है एनीवन? इसका नाम क्या है? because sometimes they'll be writing English, they'll not give you the molecular formula, so we need to know the names also. सेकेंड वाला क्या था, उसको तो इथीन बोलते हैं आईपीसी के हिसाब से। N2H4 को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ओके, उतना नहीं लिखेगा यार निरंजन, वो इतना डिटेल में नहीं लिखेगा, डाइनाइट्रो टेट्राहाइड्राइड ऐसा कुछ नहीं लिखेगा वो। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन में will it have the same hybridization as in C2H4 or different? Different. Why different? Why different? sp3. Because nitrogen is having lone pair also, which was not present in carbon वाले केस में, there was a double bond. तो double bond के pi को we don't count in steric number, but lone pair is counted in steric number, and that's why each carbon is there sp3 hybridized. Okay, H2O2, hydrogen peroxide. This is called hydrogen peroxide. What is the hybridization of oxygen here? It is स्ट्रक्चर याद है किसी को? मैंने बताया था एक पूरा स्ट्रक्चर इसका, दिस इज कॉल्ड ओपन बुक स्ट्रक्चर, इफ यू रिमेम्बर। बोला था एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, और तीसरा इस पेज पे रहेगा, तो दिस इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना, इसी को ओपन बुक स्ट्रक्चर बोला था। This angle was called dihedral angle, which is more in case of gas phase than in the solid phase. ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आगे डिस्कस करेंगे, बट केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज हैविंग two lone pairs also, है ना, each oxygen will be having 2 lone pairs and 2 sigma bonds, and that's why each oxygen is sp3 hybridized, इसलिए तो देखो ना नॉन प्लेनर हो गया स्ट्रक्चर। एनी डाउट? C2H2, C2H2 का कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, एसिटिलीन है ये, H C ट्रिपल बॉन्ड C H, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। CO2 का कार्बन,
CO2 is like this one, है ना, लीनियर है, तो कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp ओके, सो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इसको हम लोग sp2 बोल देंगे। सर आप N2H4 का स्ट्रक्चर एक बार बना सकते हो? ओके, N2H4 इज लाइक, देखो एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब तो ऐसा दिखेगा कि देयर विल बी अ लोन पेयर, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अनदर नाइट्रोजन which is having lone pair, then hydrogen, hydrogen, ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। So nitrogen is having, each nitrogen is having 3 sigma and 1 lone pair, so that's why it is sp3 hybridized. Huh? This is hydrogen. Any doubt up to this point? So let's go to exceptional cases of hybridization, again covered in chemical bonding. आज समझ लो वही काम कर रहे हैं हम लोग. We are covering all the exceptional cases of hybridization, and again I am reminding you, organic या inorganic में first observation then explanation. ठीक है, हम लोग सबको लॉजिकली ले जाने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी लॉजिक फेल होता है, देन वी नीड टू गो बैक कि ऑब्जर्वेशन क्या था, उसके हिसाब से फिर लॉजिक निकालते हैं। That is the tragedy of chemistry also, because we know that multiple factors are working together. हर बार एक ही लॉजिक सब जगह चलेगा ये जरूरी नहीं है। तो जैसे अभी इफ यू रिमेम्बर ना, CH3 डॉट जब हम लोगों ने लिया था ना, CH3 डॉट जब लिया था, हमने बोला था दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, एंड इसमें मैंने बोला था दिस वाज हैविंग स्ट्रक्चर लाइक trigonal planar arrangement was there, and an extra electron was part of the pure p orbital, है ना। So this was having trigonal planar shape. When it was observed for CF3 dot, पता चला इसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप आया ही नहीं। कैसा आया? तो वो आया पिरामिडल शेप। So if it is having pyramidal shape, जरा पीछे जाकर देखते हैं ऐसा पिरामिडल शेप इससे पहले किस में आया था। इफ यू सी, जब मैंने इंटरमीडिएट डिस्कस किया, देखो पिरामिडल शेप किस में आया है, which intermediate is having pyramidal shape? Carbon ion, है ना। Why carbon ion was having pyramidal shape? Because it was having an electron pair, and generally we say that electron pair is being accommodated by hybrid orbital, इसलिए उसको भी काउंट किया था। जबकि सिंपल एक डॉट आया था, that means an electron was appearing, then it was considered to be the part of pure p orbital. If I am getting pyramidal shape of CF3 dot, then there must be something different in CF3 dot than in CH3 dot, है ना। और वहीं से ये एक्सेप्शन आया। तो अगेन इट वाज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट दैट CF3 dot का शेप इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, इट इज पिरामिडल, देन द एक्सप्लेनेशन केम, एंड एक्सप्लेनेशन कैसा आया कि द सराउंडिंग एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, देन क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। इफ इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन ना, देन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल आल्सो हैव डिक्रीज इन एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई, अच्छा सिंपल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ये पार्टिसिपेट करता है, और व्हाई इट इज नॉट अकोमोडेटेड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल? बिकॉज इसकी एनर्जी काफी हाई। इफ आई एम हैविंग एन ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, इट्स एनर्जी इज वेरी हाई, एंड हाइब्रिडाइजेशन की पहली कंडीशन यही है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स कैन हैव only same energy or similar energy, it should not be drastically different, है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, why single electron is generally not accommodated by hybrid orbital? Because the orbital which is accommodated single electron is having very high energy, and that will not participate in the hybridization. But in this case, when the surrounding atoms are highly electronegative like F or O, then we say that they are pulling the electron, unpaired electron orbital so much that the energy of that orbital will come so low that they can also participate in the, that orbital can also participate in the hybridization, and that's why this becomes the part of a hybrid orbital.
ठीक है. सो दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड विद दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ मिलते हैं? sp3 में है ना. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस इज accommodated by sp3 hybrid orbital. Same thing happens in case of NO2. NO2 का तो मतलब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो एनर्जी कम कर देता है उसको. तो that is attracting the electron towards it, and that's why that will decrease the energy level of that single electron orbital also, and that is also participating in the hybridization law. Again, ये कहानी क्यों बनाया? क्योंकि पहले शेप ऑब्जर्व किया. ये ऑब्जर्व शेप रियल लाइफ में मिला कि पिरामिडल शेप आ रहा है, इट इज नॉट ट्रायगोनल पिरामिड, एंड दैट्स व्हाई इट वाज कंसीडर्ड टू बी कि डेफिनेटली यही लॉजिक काम कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है. ओके, ये सब कहानियां बनाई गई हैं बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन. वैसा ही NO2 के केस में क्या हुआ ना, दे ऑब्जर्व दैट कि NO2 के केस में इट वाज कंसीडर्ड टू बी, इसका शेप जो आया ना, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बट ये जो एंगल आया ना, दिस एंगल इज वेरी क्लोज टू 130 डिग्री. नाउ sp2 का आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है sp2 के लिए? व्हाट इज द आइडियल बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री. sp के लिए कितना होता है? 180. 180. नाउ इफ यू सी, अगर मैं नॉर्मल जनरल तरीके से जाता ना, विच इज नॉट द एक्सेप्शनल केस वाला, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स नाइट्रोजन इज हैविंग? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? डबल बॉन्ड का एक और एक सिंगल बॉन्ड है राइट साइड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दैट इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड. सो दैट्स व्हाई 2 सिग्मा बॉन्ड एंड विदाउट एनी लोन पेयर. तो हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए था? इफ आई एम हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, देन इसके हिसाब से तो हाइब्रिडेशन शुड बी sp, है ना. बट sp आता तो शेप कैसा होना चाहिए था? लीनियर होना चाहिए था. और वेरी क्लोज टू लीनियर भी आता तो मान लेते हैं ना, 180 के क्लोज भी आता तो मान लेते. ये 130 जो है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 128 और 129, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, बट इट इज वेरी क्लोज टू 130. 130 is more closer to 120 or 180? 130 is more closer to 120 or 180? 120. 120 definitely. So this is more closer to sp2 hybrid orbital का bond angle है ना, and that's why we say that कि NO2 में if they're asking you what is the hybridization of nitrogen, we say sp2, and we say that this is accommodated by sp2 hybrid orbital. That's why it is exceptional case. Huh? Is it okay? Any doubt up to this point? सर वो सेफ्टी वाले में हाँ, आपने बोला ना कि उसकी वो एनर्जी कम करता है, तो वो कम कैसे करता है? ये नहीं, CS3 में नहीं हो पाता, इसलिए तो उसको प्योर में रखा. बट CF3 में, बिकॉज F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा, तो दैट विल आल्सो पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट न्यूक्लियस, है ना. एंड दैट्स व्हाई अट्रैक्शन से क्या होता है? एनर्जी नीचे जाती है ना. अट्रैक्शन लीड्स टू लोअर एनर्जी, है ना. इज इट ओके? हाँ सर. रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है. तो एनर्जी कम होने के कारण क्या हो रहा है ना, कि इट इज गेटिंग दैट मच एनर्जी विच कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. अर्लियर लाइक इन CS3 डॉट, there is no other factor which was acting, and that's why it was having so much higher energy that it cannot participate, and that's why it was remaining as pure orbital, है ना. But because of presence of F in CF3 dot or presence of oxygen in NO2, the energy of the orbital which is accommodating the single electron is getting lowered, and that's why it can participate in the hybridization. And that's why in this case, in these two cases, we say that the single electron is also being accommodated by hybrid orbitals. Is it okay? Clear ना? Yes, Anyone sir. having any doubt? चलो तीसरे एग्जांपल पे जाते हैं. तो this was first exception. CS3 dot is not exception. This is first. This is second. Third exception is benzene. जिनको मैंने पढ़ा है उनको सब पढ़ा दिया है. बेंजाइन इज C6H4. वैसे तो फॉर्मूला लिखते हैं, बट स्ट्रक्चर वाइज ये कैसा होता है? इट इज लाइक जो बेंजीन पढ़ा है ना, उसी में एक डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड कर दो.
This is called benzene. अब ये ट्रिपल बॉन्ड किया है. Now if I ask you the hybridization of different atoms, तो ये तो sp2 है. It is having 3 sigma है ना, एक हाइड्रोजन भी होता है. It is sp2. It is sp2. It is sp2. But if you see this one, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, 2 सिग्मा है सिर्फ. इसके पास भी 2 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है. Now if I ask you what should be the hybridization of these two carbon atoms? SP. sp होना चाहिए, लेकिन sp होता तो इसके अराउंड शेप कैसा होता? What should be the shape around these two carbon? लीनियर Linear दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? एंगल्स पे दिख रहा है. दैट एंगल इज वेरी क्लोज टू 120 इटसेल्फ, है ना? तो अगर वो 120 जैसा एंगल दिख रहा है, इफ इट इज मोर क्लोजर टू 120, देन वी आर गोइंग टू से कि इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा, है ना? तो अगेन ऑब्जर्वेशन देन एक्सप्लेनेशन. सो if you observe it to have a bond angle of 120 degree, definitely that carbon will be sp2 hybridized. But now we need to explain कि अभी तक जो पढ़ा उसका क्या हुआ, है ना? There should be a counter argument ना. अभी तक जो पढ़ा है उसका क्या हुआ फिर इस बार? ये sp2, तो sp2 के तो 3 ऑर्बिटल बनते हैं ना, तो 2 तो सिग्मा दिख रहे हैं, पर तीसरा sp2 क्या कर रहा है? Whenever you will be forming sp2 कैसे बनता है? मान लो एक s लिया, एक px and एक py ले लिया, just for the discussion, then you will be getting 3 sp2 hybrid orbitals, है ना? Now if I say these two carbon are also sp2 hybridized, so what is the role of this third sp2 hybrid orbital? Now let's see that with the structure itself. So now मैं जस्ट स्ट्रक्चर बना देता हूं कि वी हैव गॉट कार्बन 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 कार्बन. ठीक है, इस पे हाइड्रोजन है, थोड़ा और बड़ा करना. चलो ठीक है, इधर ही बना दूंगा. इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है, और यहाँ मैंने अभी के लिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लिया है. ठीक है, ये जो 2 कार्बन बच गए ना, मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट इट. लाइक दिस इज 1 कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, जिसके बात हम लोग कर रहे हैं. तो ना बाकी सब तो sp2 हाइब्रिडाइज है, इनके पास पाई बना हुआ है. सो आई जस्ट इंडिकेट दोस पाई बॉन्ड्स आल्सो, ग्रीन कलर. एक इसके बीच में पाई बना हुआ है, एक इसके बीच में पाई बना हुआ है, और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो डेफिनेटली एक पाई इधर बना होगा ना, और दूसरा पाई किधर बना होगा? तो दैट विल बी इन द प्लेन. एक पाई इधर भी बना होगा जो इनके बीच में होगा, दैट इज इनसाइड इन द प्लेन इटसेल्फ. अब ये जो पाई है ना, ये ओरिएंटेशन पे दिख रहे हैं ऑर्बिटल्स, है ना? तो these are sp2 hybrid orbital which generally do not form pi bond. Pi bond generally कौन बनाता है? Pure orbitals. But this is the exceptional case. What is exception in it? That यहाँ पर hybrid orbitals are forming the pi bond, which will not be very strong. So that's why if they are asking you purple वाला stronger है या green वाला, तो we'll say that green वाला is a stronger pi bond than the purple वाला, and that's why that can be easily broken. And that's why benzene is not a normal molecule; it is also intermediate. During the तो ये reaction, फॉल्स पाई बॉन्ड बोलते हैं कि फॉल्स बोलने का नहीं बोल सकते. इट इज एक्चुअल पाई बॉन्ड, है ना? पाई बना है, बट इट इज सो वीक दैट it will be easily broken. So if I have to break one pi bond, this purple wala will be the one which will be broken. बाकी देखो फैंसी वर्ड बहुत सारे लोग यूज करेंगे, दैट इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड. फॉल्स पाई बॉन्ड इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड, है ना? तो फॉल्स नहीं कहूंगा मैं, बट एक्सेप्शनल केस है that it is being formed by, generally pi bonds are being formed by pure orbitals, lateral overlap of pure orbitals. This is one pi bond which is being formed by lateral overlap of hybrid orbital, which is a very poor overlap because वो एंगल पे है ना. देखो ऐसा ऐसा बनता है तो दिस इज इफेक्टिव, एक ऐसा, इनके बीच का लेटरल तो बहुत ही टफ है ना, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी वीकर, है ना, एंड दिस विल बी स्ट्रॉन्गर. So it is not normal pi bond. Normal pi bonds are being formed by pure orbitals, lateral overlap of pure orbitals. ये पर्पल वाला जो इधर मैंने बनाया, this is being formed by hybrid orbitals, and that's why it is very weak. But that changes the picture. That changes the picture that carbon is having only 2 sigma bond. Even then, it is having sp2 hybridization. That's why it is exceptional case. Is it okay?
तो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू कुछ रिएक्शंस होते हैं, बट दैट इज नॉट ऑफिशियली इन सिलेबस, बट हम लोग कुछ रिएक्शंस को देखेंगे फ्यूचर में, which will be including the formation of benzene during the reaction. But we need to understand that still, even in benzene, all the carbon are sp2 hybridized, because one for the triple bond wala carbon, one hybrid orbital of each carbon is in lateral overlap with each other to form a pi. Any doubt? So could you please just re-explain why the green colored pi bond is stronger? Because that is lateral overlap, है ना? Lateral overlap में if they are parallel to each other, they can have a easier lateral overlapping, है ना? Oh, अच्छा. They can come more closer to each other. ये देखो ना, ये एंगल पर टेढ़ा हुआ मुंह घुमा के बैठा हुआ है. Yes. If they want to come more closer ना, there will be very extremely poor overlap, है ना? उसका bigger Okay, sir. part जो है वो तो बहुत दूर है ना? Yes. ये वाला part तो बहुत दूर है ना? Yes. But यहाँ Sir, पे just ये बहुत ही close है. yes. Okay. So यहाँ पे and so how did you know that you're in the sp2? There'll only be px and py. नहीं, that is not necessary. I told you that's just for the sake of discussion. I am taking it Oh, as अच्छा. x and y. If this is Okay. xy plane, है ना? If this is xy plane, then we are saying that we can take Okay, sir. any two orbital. Okay, sir. जैसे d आता है, then it becomes specific, but otherwise it is not specific up to sp3. Okay, sir. Okay, this was the third example. What is exceptional part in it? That in this case, even hybrid orbital is forming a pi bond, and is participating in formation of pi bond. चलो फोर्थ पे आ जाते हैं. फोर्थ एक्सेप्शन इज डाइबोरेन, B2H6 जिसको बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट ऑफ JEE एडवांस एज वेल एज मेंस, B2H6. इसकी कहानी वैसे तो मैंने अगेन केमिकल बॉन्डिंग ये सब पढ़ाया हुआ है. I'm just having a revision session ले रहा हूँ, ऐसा समझिए. ठीक है, तो डाइबोरेन का क्या है ना कहानी. इफ आई एम हैविंग BH3 जैसा मॉलिक्यूल अगर मैंने लिया ना, तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना? अगर मैंने BH3 लिया तो इट इज लाइक दिस, and this will be having sp2 hybridization, है ना? But this is electron deficient. Why it is electron deficient? क्योंकि इसके around only 6 electrons around it, है ना? And it is a second period member which will be desperate to get the remaining 2 electrons from somewhere. And that's why if some other reagent is coming, like H minus is coming ना, it will immediately capture it. मान लो इस पे H minus आएगा ना, तो फटाक से क्या करेगा ना, BH4 minus बना देगा. देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो BH4 minus कैसा दिखेगा? It will be having 4 bonds हैं, तो there will be tetrahedral structure हो जाएगा. And इस पे there will be a minus charge. So this is now having 8 electrons, है ना? तो this is one way. If it is getting any reagent which is going to give it 2 electrons, then it will capture immediately. But if some reagent is not present, then what it will do? तो इसने एक जुगाड़ करके रखा है. ठीक है, तो जुगाड़ क्या है समझो. इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए ना. ऐसा एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसको भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना. तो क्या करते हैं, ये जुगाड़ क्या है देखो. इन्होंने कहा नॉर्मली तो मिलने से रहा, दोनों गरीब लोग हैं, 2 गरीब मिलके अमीर थोड़ी हो सकते हैं, है ना? दोनों के पास डेफिशिएंसी है. बट इन्होंने जुगाड़ क्या करके रखा है ना, इसने बोला मेरे पास 2 हाइड्रोजन तो इधर है, एक और हाइड्रोजन है, और इसने कहा मेरे पास भी अनदर मॉलिक्यूल इज आल्सो हैविंग 3 हाइड्रोजन. इसने कहा मेरे पास भी एक हाइड्रोजन है. अभी अलग से तो इलेक्ट्रॉन है नहीं इनके पास. इन्होंने जुगाड़ क्या किया ना, बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ना बिटवीन B एंड H, I can give you for some time in between these two. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसने कहा कि हम लोग we can share both the electrons between the 3 atoms. जो B और H के बीच में था, now it is saying कि B और H के बीच में नहीं, B, H and B के बीच में रख लेते हैं. सिमिलरली इसने कहा तू दे रहा है तो मैं भी देता हूँ. तो इसके पास भी जो 2 इलेक्ट्रॉन था ना, इसने कहा कि इधर दे देता हूँ मैं. Now that those 2 electrons will be shared between these 3 atoms. तो एक्चुअली ये पूरा एक फॉर्मेशन जो है ना BH और B के बीच का, ये एक्चुअली ऐसे दिखाते हैं और बोलते हैं इट इज नॉट अ नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, इट इज कॉल्ड अ बनाना बॉन्ड. ये बनाना जैसा दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड अ बनाना बॉन्ड, और इट इज कॉल्ड अ 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी
It is called a 3-center 2-electron bond, which is also called a banana bond. तो ऐसा एक बनाना बॉन्ड ऊपर बना है, ऐसा ही एक बनाना बॉन्ड नीचे बनेगा, बाकी तो दो ऐसा है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग इन B2H6। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? तो पहली बात तो ये कहानी ही कुछ अजीब सी हो गई है ना। 2 electrons which were already in shared state, now it is being shared among 3 atoms, है ना। 3 nuclei are attracting 2 electrons, है ना। तो दैट इज वन पार्ट। बट जो एक्सेप्शन की बात मैंने की है वो क्या दिखेगा? ऐसा नहीं लग रहा है कि बोरॉन के प्लेन में 2 हाइड्रोजन है और तीसरा हाइड्रोजन ऊपर और चौथा हाइड्रोजन नीचे, है ना। इज इट ओके? इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन ना, आई विल जस्ट शो यू what type of structure it is having. See, this is the structure. अगर मैं ये पूरा एक प्लेन बना दूं, this is the plane, this is the plane in which 2 boron and 4 hydrogen atoms are there, then this is above the plane, this is below the plane, है ना। तो around this boron 2 bonds are in the plane, third is above and fourth is below। ऐसा कौन से स्ट्रक्चर में मैंने बताया था where 2 bonds can be brought in one plane and the third and fourth will be above and below the plane? ऐसा कौन से स्ट्रक्चर में मिलता है? 2 bonds in one plane, third and fourth above and below the plane। CH4। CH4 में दैट इज टेट्राहाइड्रल एलिमेंट, है ना। टेट्राहाइड्रल एलिमेंट का हैबिटेशन क्या होता है? sp3। इट इज sp3। दैट मींस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर वी कैन से ना कि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ इफ यू सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, ये ग्राउंड स्टेट में तो दिस इज हैविंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी लिखूंगा ना तो आई विल बी गेटिंग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इफ इट हैज टू हैव अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3, तो इसमें किसको किसको हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा? ऑल 4 को ना। ऑल 4 मिलेंगे तभी तो sp3 बनेगा। एक s और 3p मिलके तो sp3 के 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका मतलब वी आर इवन हाइब्रिडाइजिंग द वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, which is not the normal case। vacant orbital generally is a pure orbital, है ना, and that's the exceptional case in this one। is it okay? सर और कौन से कंपाउंड से बनाना बॉन्ड शो करते हैं? यही वे आएगा। इसकी जगह मैं अगर H की जगह CH3 डाल दूं ना, if I say I'm having Al2CH3 6, इवन इन दैट केस कार्बन जो आ रहा है ना, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा नहीं है ना। तो दैट विल बी, यहां पर हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन इज यूटिलाइजिंग इट्स 1s ऑर्बिटल, बट कार्बन विल बी यूटिलाइजिंग इट्स sp3 ऑर्बिटल, है ना, इन फॉर्मेशन ऑफ बनाना बॉन्ड। दैट्स द ओनली डिफरेंस। These are the two important molecules जिसमें हम लोग बनाना बॉन्ड की बात करते हैं। Now there is a third molecule called Al2Cl6। देखो मैंने ऊपर एक्सेप्शन की लिस्ट में लिखा भी है ना, Al2Cl6। बट उसके बॉन्ड को बनाना नहीं बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट विल हैव अ स्ट्रक्चर लाइक, उसमें एक प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ पे आ रही थी। हाइड्रोजन वाज नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बट Al2Cl6 में इफ यू सी ना, दिस इज हैविंग क्लोरीन व्हिच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भर भर के। ये काय को शेयरिंग वाला देगा, है ना। तो बनाना बॉन्ड इज ऑलवेज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बट यहाँ पर देखो ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसने दे दिया इधर, है ना। इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसने दे दिया इधर, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जाने की जरूरत नहीं है ना। दैट्स व्हाई वी डोंट कॉल इट बनाना बॉन्ड, है ना। ये कोई बनाना बॉन्ड नहीं है। दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देयर आर 2 नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड्स। बट B2H6 या Al2CH36 में यू विल बी गेटिंग banana bond because there is no extra electron available। These molecules are electron deficient, है ना। Is it okay? So that's the exceptional part in B2H6। Any doubt up to this point? Chalo, then give me the answer of this question।
5. ओके पहली बात तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स, है ना। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सर वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा मिसिंग है, सब देखना पड़ेगा। हाँ जी बोलो। सर वांटेड बी 6. Okay, one is saying 5, another is saying 6. I'll wait for another answer or same answer. Even if you are getting same answer, you can express it. So 4. Okay, 4, 5, 6. We have got 3 answers. Same है, different है, बोलने का है। 5. Okay, 5. अपनी क्लास बेशर्मों की क्लास, और बेशर्मी से ही लर्निंग आती है, ये समझ लेना बात। शर्माया तो सीखा नहीं। ठीक 6, सर okay, 4, 5, 6 ये 3 आंसर्स आ रहे हैं। Sir 4. Okay, यस again सर 4. सर मुझे भी लगता है 4 ही होना चाहिए. माय आंसर वाज रॉन्ग पहले. Okay, let's see. तो 4. Okay, one hint. It is not talking about only carbon atom. It is talking about how many atoms. First thing. So whatever atom is sp hybridized, I have to include that. Is it okay? First thing. So be very careful. They are asking about carbon atoms or they are asking about simply atoms. If they are saying carbon atoms, so we'll be counting only sp hybridized carbon atoms. But if they are simply saying how many atoms, it can be nitrogen, oxygen, anything. So we need to take care of that also. Now this is sp hybridized. This is sp hybridized. These are sp2 है ना, ये सब sp2 होते हैं. This is sp2. This is sp2. What about this one? sp SP sp2. अभी जस्ट सिखाया था. This is the benzene SP वाला रिंग ना. Benzene वाले रिंग का भी every carbon is sp2 only. This is not sp. Is it okay? And then we'll say this is sp2. This is sp. This is sp2. This is sp है ना. Cyanide का carbon and nitrogen both are sp है ना. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so that's why we'll say answer will be 5. Is it okay? Any doubt? हाँ, किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, उसने नाइट्रोजन छोड़ दिया होगा, फिर वो ट्रिपल बॉन्ड जो बेंजाइन वाला है उसको काउंट कर लिया होगा. चलो, I'll give you another question. Any doubt? If you have any doubt, just ask me, or otherwise solve this question. A. Okay. Okay, I'm getting different kind of answers. So 9, 9. Okay. But you need to understand, एग्जाम में कोई दोबारा वेरीफाई करने को नहीं पूछेगा. And it may be an integer type of question. You don't have option. And अगर ये even if it is not integer type question, मान लो actual answer 8 आता है तो वो 7, 8, 9 तो देंगे. अगर actual answer 9 आता है तो 7, 8, 9, 10 तो देंगे. Even if it is having options. Sir 9. Okay. 3 of you are saying 9. ये वाला? Okay. This is sp3 है ना?
This is also sp3. This is also sp3. Again, they are asking about atoms, so we need to include all the atoms, है ना, which are having sp3 hybridization, है ना. This is sp3. जो sp3 है वही सिर्फ काउंट कर रहा हूं मैं. This is sp3. This is sp3 because it is having two sigma bond, two lone pairs, है ना. This is also sp3. This is sp3. This is sp3. But this will be sp2, है ना. This will also be sp2. तो ये तो नहीं काउंट करना है. तो बाकी बचे हुए 3 इधर दिख रहे हैं. 3 + 3 + 3 9 हो जाएंगे. Is it okay? Any doubt? चलो इसका आंसर करो. ऑर्गेनिक इज लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एक बार बात समझ ली, 40-50 क्वेश्चन करने होते हैं. C. ओके. ओके. CO बॉन्ड जहां बना है उसी कार्बन को देखना है. तो इफ यू सी दिस कार्बन, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना. इसका मतलब इन ऑल इट्स सिग्मा बॉन्ड्स इट विल बी यूटिलाइजिंग इट्स sp3 ऑर्बिटल, है ना. यहाँ पे इफ यू सी दिस वन, दिस इज अगेन sp3 only. But if you see this one, this is sp2, है ना. That's why it will be utilizing its sp2 hybrid orbital to form all the sigma bonds. Pi bond will be formed by pure p orbital, no? So that's why this will be the answer. And about this one, again, this is sp3. So it will be utilizing sp3 hybrid orbital in formation of every sigma bond, including CO bond. And that's why C is the right answer. C is the right answer. ये बताओ. These are some simple questions, just for practice whatever we have learned till now. B. Okay. C1 C2 बोल रहा है, तो C1 में this is coming which is sp hybridized and this is sp2 hybridized, है ना. सीक्वेंस में अगर 1 2 देंगे तो sp sp2 होता है. अदरवाइज कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सीक्वेंस में दिख रहा है. दैट्स व्हाई विल से sp2 sp will be the answer, है ना. इज इट ओके? चलो नेक्स्ट वन. Solve these two. There are two questions. These are not options. These are two questions. Sir, is the answer for the first one 6? I think 6. Okay. सर 3 ना बॉन्ड्स पूछा है. Okay. So we have got two answers, 6 and 3. Oh yes, sir, I didn't read the bonds. Okay. Are you sure it is 3? Sir, Sir, 4. Hmm?
4 How in the much? first 4. 4 you are saying, okay. So we have got, Haji? वही 4. 4 you are also getting 4, okay. So basically it is not asking you number of sp2 hybridized carbon atoms. It is asking you sp2 carbon sigma bonds. So we need to identify which carbon atoms are sp2 hybridized. This is sp2. 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 And this is sp2. Now they are not asking you number of carbon atoms which are sp2 hybridized. Otherwise my answer will be 6, है ना? But this is asking you sp2 carbon का sigma bond कितना है? This is one sigma bond which is sp2 sp2 से बना है. This is also another sigma bond which is formed by sp2 sp2 overlap, है ना? This is another third one, and then इस साइड तो sp3 है, तो इधर तो नहीं आएगा. But यहाँ पर ये आ जाएगा फिर चौथा, है ना? That's why first answer will be 4. sp2 hybridized carbon atoms are 6. That is 6. But this is the answer because they are asking you number of bonds. What about the second one? 7. Okay. Any other answer? Or same answer? 10. Okay. 7, 10. We have got two options. 6. So नहीं, Okay. 9. 7, Oxygen 10, दिखेंगे 6, सर. 9. 7, 10, 6, 9. सर 10 Okay. हटा दीजिए. Okay. 7, 7, 6, 9. 3 answers we have got so far. Sir, 9. Sir, 9. Okay. 7, 6, 9. 9. Okay. Okay, let's see. How many sp2 hybridized carbon? मैं सिर्फ पॉइंट कर दे रहा हूँ. sp2 hybridized atoms कितने कौन कौन से दिख रहे हैं? Carbon atoms. है ना? These are sp2 hybridized carbon atoms. Is it okay? Then if I have to indicate the number, those bonds which are formed by sp2 sp2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 minute. एक कोई एक्स्ट्रा हुआ क्या? हाँ, ये तो O वाला है ना, तो this will not count. Is it okay? This is actually 12. sp2 hybridized carbon atoms कितने हैं? तो then it is 13. sp2 hybridized atoms कितने हैं? Then it is 14 because oxygen is also sp2 hybridized. Carbon atoms सर आप एक बार वापस काउंटिंग दिखा सकते हो? देखो ना, रेड वाला जितना दिख रहा है वही सब है. You want I will make it again. थोड़ा बड़ा बना देता हूँ. See, मैंने ग्रीन से ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है. जस्ट आई विल इंडिकेट दोज बॉन्ड्स व्हिच आर sp2 sp2 1 2 3 4 5 6. ये सारे 6. ठीक है. Then this one also, this one and कौन सा बच गया? यहाँ भी डबल बॉन्ड था ना. सॉरी, 1 minute. It was also having a double bond. यहाँ भी था. So then in fact this one and this one and this one, ये तीन भी, ये तीन तुम लोगों ने मिस किया होगा ना, या फिर ये मिस किया होगा, ये मिस किया होगा और ये मिस किया होगा. ओके. तो 12 आ रहा है. 12 is the answer. Clear ना? So one more question, then we'll move to next topic. This one. Answer this one.
Sir, B. B. Okay, all the CH bond are sp2s sigma bonds है ना. So if I ask you sp2s sigma bonds, it will be 6 है ना. CH bonds are like that. So if I'm asking you sp2s sigma bonds, you will say 6. If I ask you sp2 sigma bonds, then how many? Benzene में how many sp2 sigma bonds? 6. All the CC sigma bonds है ना. Again 6. If I say sp2 pi bonds, 3. 0, because there is no pi bond which is formed by hybrid orbital है ना. इसमें बेंजीन में बनता था एक, बट बेंजीन में जो भी बना वो pp pi bond है ना, उसी को p pi bond बोलते हैं. 2003. Is it okay? Clear ना? Pi bonds are formed by, generally pi bonds are formed by lateral overlap of pure p orbitals, and there is no exceptional case in benzene. Benzene में आता था एक pi bond जो कि sp2 से बनता था, but in benzene there is no exceptional case, and that's why the pi bonds are being formed by pure p orbitals, and that's why pp pi bond जो है वो 3 pi bond है, तीनों के तीनों pp कहे जाएंगे. हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करके फिर आगे नेक्स्ट डे उसको हम लोग और डिटेल में लेके जाएंगे, बट राइट नाउ I wanted to discuss कि अगर मैं इसी में किसी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को दे दूं, and if I ask you whether it is planar or not, or if I ask you how many atoms can be brought in the same plane for the given molecule, then we need to understand कि sp या sp2 के अराउंड जो है नॉन प्लेनर अरेंजमेंट नहीं होता है ना. If I'm having atoms with sp hybridization or sp2 hybridization, then we generally get the molecule. Generally लिखा है मतलब exceptional case आएगा आगे, but generally we say that कि if I'm getting an atom which is having sp hybridization, तो उसके अराउंड प्लेनरिटी इज मेंटेन्ड. sp में लीनियर हो जाता है तो दैट इज आल्सो प्लेनर. sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर आता है, दैट इज प्लेनर. sp3 में भी दो बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन में लाए जा सकते थे. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स है ना, उसके दो बॉन्ड्स को यू कैन ब्रिंग इन सेम प्लेन. द थर्ड एंड फोर्थ if present will be coming out of the plane है ना. one will be above the plane, another will be below the plane. Is it okay? Is it okay? So now, if I ask you, there are few questions about the planarity. If I ask you these 6 molecules, कौन कौन सा planar है बताओ? BF3 हाँ सर. planar है ना. sp2 आता है ना बोरॉन पे, it is having sp2 hybridization. CH4, is it planar? Non-planar. No sir. Non planar है ना, क्योंकि कार्बन is having sp3. sp3 में दो बॉन्ड can be brought in the same plane, but इसके पास चार चार बॉन्ड है तो चारों को नहीं ला पाएंगे ना. What about NS3? Non-planar. Non-planar because again it is sp3 with 3 bonds. दो रहता तो चलता, लेकिन 3 है तो नहीं आएगा. अच्छा H2O लिख दिया तो then oxygen is sp3 hybridized, but it is having only 2 bonds. So 2 bonds too can be brought in the same plane, so we can call it planar. Is it okay? NH4 plus again it is sp3 है ना, तो नॉन प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल रहेगा. H2O2 अभी जस्ट बताया था, ओपन बुक स्ट्रक्चर है ना. both the oxygen are sp3 hybridized, and that's why because of that it is having a non planar structure. ओपन बुक है, दो पेज अलग अलग प्लेन में है ना, and that's why this is non planar. तो इसको भी प्लेनर नहीं बोलेंगे. C2H4 Planar. प्लेनर है, so this is planar. I'll give you such type of some questions, but again I just want to discuss one set of examples. जरा ये देखो, इसको जरा बताओ. फर्स्ट वन प्लेनर है कि नहीं? Non-planar. नहीं है. नॉन प्लेनर ना, सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ये जितने दिख रहे हैं सब sp3 है, और किसी के पास ऐसा नहीं कि दो ही बॉन्ड है, बाकी दो हाइड्रोजन भी तो है, which will be above and below the plane है ना, and that's why non planar है. What about this one? Planar. प्लेनर होगा. Biplanar
बिकॉज Sir, एवरी कार्बन इज sp2 है ना, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2. So this is planar. What about this one? Non-planar. Why? Sir, CH3 at last. Because of presence of this. This is sp3 जिसके पास चार बॉन्ड है, दो रहता तो चलता है, इसके पास चार है, तो all the 4 bonds cannot be brought in the same plane. That's why non-planar. What about this one? Sir, planar. Planar है because यहाँ तो सबके सब sp2 वाले हैं, यहाँ भी सबके सब sp2 वाले हैं, ये जो एक बीच में आया वो भी sp2 ही आया, and that's why they all can manage in same plane. So this is planar. What about this one? This is called naphthalene. Planar. Planar है because every atom is sp2 hybridized है ना. Okay, one last set of examples. First one, Planar. okay, you're saying planar. Second one, Planar. okay, planar. Third one, sir, Non-planar. planar. planar. Non-planar. Non-planar, okay. Fourth one, Non-planar. why Non-planar. non-planar? Oxygen. This is sp2. इसके अराउंड भी linearity can be met. sp3. हाँ, Iodine is sp3. आयोडीन तो लास्ट है ना, उसके तो एक ही बॉन्ड है, sp3 पे भी 2 बॉन्ड तक मैनेज कर सकते हैं, इसके पास तो एक ही बॉन्ड है, तो दैट कैन बी इन द सेम प्लेन. मान लो मेरे एंड पे ऐसा आ गया CH3, देन आई कैन नॉट मैनेज इट, बट एक ही एटम है, वो तो उसी प्लेन में हो ही सकता है ना, इनफैक्ट इट विल रिमेन देयर. बताओ प्लेनर नॉन प्लेनर? Sir, non-planar. व्हाई? चलो आई टेल यू, दिस इज आल्सो रॉन्ग, एलीन वाला. दिस इज आल्सो नॉन प्लेनर. व्हाई? विल सी दैट. This is non-planar. Why? We'll see that. So we'll see some of the cases where एलिन का रोटेशन होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर रिंग का रोटेशन हो जाता है, वो पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस. उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है. यहाँ पर देखो, दिस इज sp2, दिस इज sp, दिस इज sp2. इवन देन इट इज बिकमिंग नॉन प्लेनर. ठीक है, व्हाई सो? एक जस्ट छोटा सा स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, देन विल डिस्कस इट इन डिटेल. क्या ऑडिबल ना? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, चलो आवाज आ रही है तो आज वीडियो भी देखते हैं थोड़ा सा. जस्ट वन स्ट्रक्चर आई वांट टू शो. आई एम विजिबल ना? देखो इसको समझो कि दीज आर 3 कार्बन एटम्स जो एलिन में दिख रहा है तुमको स्ट्रक्चर में ना. देयर आर 3 कार्बन, यहाँ भी डबल. पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड, दे आर नॉट पैरेलल. देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, एक सामने दिख रहा है तो एक तुमको नहीं दिख रहा होगा, एक ऐसा सिर्फ व्हाइट लाइन दिख रही होगी. जैसे मैंने इसको सामने किया, दूसरी वाली व्हाइट लाइन दिख रही है. इज इट ओके? फर्स्ट थिंग तो ये है. नाउ Yes. इफ आई ट्राई टू पुट हाइड्रोजन एटम्स ना, विजिबल ना सबको? Yes, sir. आई एम विजिबल. हाँ, नाउ आई वांट टू पुट हाइड्रोजन एटम्स. तो लास्ट में है ना 4, एक इधर रखा, एक इधर रखा. आई वांट टू पुट all the hydrogen atoms in some same plane while maintaining the hybridization. देखो अभी मैंने तीसरे और चौथे को रखा ना, तो देखो ये कहाँ जा रहा है. If you see this one, तो वही चीजें है, कार्बन with 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, अगेन कार्बन with double bond and carbon, and then 2 हाइड्रोजन.
but you can see that if I am bringing this one in one plane, अगर मैंने मान लो इसको प्लेन लिया तो these two atoms are coming out of the plane. अगर मैंने इसको एक प्लेन में लिया, ये देखो ऐसा प्लेन में लिया तो ये ऊपर और नीचे जा रहा है ना. So this is the structure of alene, in which you can see that all the hydrogen atoms cannot be brought in the same plane. We'll understand the logic in the next class कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है? And then you'll be able to understand it better. And then we'll have a generalized result. All those cases will be covering, जिसमें पता चलेगा कि atoms are sp2 and sp hybridized, but planarity may be lost due to different reasons. There are three reasons. One is this वाला case, तो इसको हम लोग बोलेंगे this is क्यूमुलिन system, जिसकी बात हम लोग करेंगे कि क्यूमुलिन सिस्टम में कौन से केस में प्लेनिटी इज मेंटेन्ड. देखो पहला वाला भी रेगुलर डबल बॉन्ड वाला है, वो भी करके दिखाता हूँ एक बार. अगर मेरे पास 4 कार्बन है ना, एंड इफ आई एम कनेक्टिंग इट विद डबल बॉन्ड्स, देखो जरा क्या होगा इसमें. इफ आई जस्ट कनेक्ट इट विद double bonds, let me see if I'm having, okay, 1 minute. इसको भी मैंने डबल बॉन्ड से ला दिया, और जैसे ही अब लाया ना, नाउ आई एम पुटिंग 2 हाइड्रोजन एटम. देखो क्या होगा, सी क्या हुआ अभी. With 3 carbon atom, all the 4 hydrogen atoms were not coming in the same plane, but with 4 carbon atom with a regular double bond system, all the 4 carbon hydrogen atoms are coming in the same plane. They are all in the same plane. I can put it on my palm. They are coming in the same plane. Is it okay? Clear है? So we'll see that what is so special about this one, which was not there in the previous case, जिसमें planarity was lost. So that is one part which is called cumulin system. Second, logic of loss of planarity, even if atoms are sp2 or sp hybridized, is something called steric inhibition to resonance. उसकी बात करेंगे. Steric repulsion is the actual word. That is the second case. And third case will be ओके, ये वाला केस भी डिस्कस कर दूंगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एनुलिन सिस्टम. नॉर्मली बाद में करते हैं, अभी मैं कर दूंगा. तो देयर इज एनुलिन वाला सिस्टम. इफ आई एम हैविंग 8 और 10 और 12 मेंबर्ड रिंग ना, जिसमें एवरी कार्बन इज sp2 hybridized, even then it will have non-planarity. That means all the atoms cannot be brought in the same plane. So we'll be talking about those 3 cases in which even if all the atoms are sp2 or sp hybridized, even then molecule is not completely planar. एंड एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे उसके. ठीक है, तो वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. देन आई वांट यू टू रिवाइज व्हाटएवर यू हैव लर्नड, वेरेवर यू हैव लर्नड केमिकल बॉन्डिंग वाला सेक्शन, पर्टिकुलरली अप टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वहीं पर बॉन्ड एंगल की बात आती है, बॉन्ड लेंथ की बात आती है, डायपोल मोमेंट की बात आती है ना. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चन. इनफैक्ट आई विल शेयर सम ऑफ द क्वेश्चन, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं भेजूंगा तुमको, उसको ट्राई करके देख लेना, और उसी बहाने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज भी हो जाएगा. And then next class में after discussing all those questions ना, we'll be entering into the concept of resonance, जिसका part of it was discussed in chemical bonding again, है ना. तो क्या करने का है, केमिकल बॉन्डिंग में जितना भी पढ़ा हुआ है, not molecular orbital theory or sp3d sp3d2 और sp3d3, उसमें नहीं जाना है, but up to sp3 whatever you have learned ना, including resonance का concept, dipole moment, bond angle, bond length, उसको जरा एक बार रिवाइज करके आओगे. and the information is, अपना मंडे का जो क्लास होगा दैट विल बी ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, बट अपना जो वेंसडे एंड सैटरडे का क्लास होगा दैट विल बी ऑन जीओसी वाला पार्ट. ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज इसी यहीं पे क्लोज करते हैं. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पॉइंट इटसेल्फ. ओके, कि व्हाई दिस एलीन वाज कमिंग नॉन प्लेनर, जबकि वो 4 कार्बन वाला जो था वो प्लेनर हो गया था. व्हाई जो नाइट्रो ग्रुप वाला दिख रहा था दैट इज बीइंग नॉन प्लेनर. या फिर जो मैंने बोला 8 मेंबर रिंग और 10 मेंबर रिंग और 12 मेंबर रिंग compound which is having all the carbon in sp2 hybridization, that is also non planar. what is the reason for that, वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वहां से फिर आगे बढ़ेंगे ना. तो आई होप कि जीओसी समझ में आ रही होगी बात, है ना. तो थोड़ा सा रिवीजन तगड़ा रखोगे ताकि अपने को थोड़ा आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं लगेगा कि थोप दिया सर ने कुछ भी, है ना. चलो ओके, ठीक है, फिर क्लोज करते हैं ना आज का लेक्चर. चलो जी, बाय एवरीवन. सर बाय सर, डाउट्स. थैंक यू सर. हाँ जी, डाउट्स क्लियर हो जाओ. डाउट्स. ओके ओके, रुक जाओ. सर 1 minute.